you so much. So, welcome, friends, to our regular Thinking Thursday. It's always an honor on a Thursday where I meet and introduce people who are young, dynamic, motivated, and who want to make a difference in the life of others. And that is so heartwarming for me. जब भी मैं किसी young लड़की को या लड़के को देखती हूँ जो एक हीलर है, जो बहुत सारी चीजें सीख के आए हुए हैं, हमें लगता है कि यार काश हम भी थोड़े यंग होते और इस दौर में होते तो शायद हम भी बहुत कुछ करते. But the thing is that it's always a pleasure. And today we have Anshuka with us here, and she's going to talk on a very interesting modality called DNA scan. जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मैंने सोचा यार डीएनए को भी स्कैन किया जाता है, मतलब कैसे, विदाउट अ मशीन, विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट, हाउ डू यू स्कैन योर डीएनए? So I think Anshuka will introduce herself, what are the other things that she does, and how this journey began for her, and how she got interested in DNA scan. And I think we are all interested in this today. So, Anshuka, welcome, my dear. Okay, Yeah. So, wait, I'll restart the recording. Ma'am, you are mute. The problem with my Wi-Fi today, that's why. अभी recording start हो गई है. So, yeah. yeah. So, So, Anshuka, thank you, ma'am. Thank most you welcome so again. much. Can you Thank please you. tell us something about yourself? Yeah, thank you. First of all, thank you. And it was dream to meet you. और वो हुआ मेरा सेवा में. And I'm thankful to you and God कि मैं आपसे मिली. And मेरी जर्नी तो अकल्ट में अगर मैं बोलूं 2007 में स्टार्ट हो गई थी. When I wanted to understand some questions and answers of my life. कि वो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में, बहुत कुछ होता है. सो ये एक था. एंड आई एम अ रिसर्चर बाय हार्ट, तो बजाय कि किसी चीज को फॉलो करने के आई जस्ट गो कि ये क्यों हो रहा है. क्वेश्चन ज्यादा होते थे पहले, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, सरेंडरनेस जीरो था, और हर चीज के पीछे पड़ी रहती थी कि क्यों होता है, क्यों होता है. एंड उसी रिसर्च में समझ आया जब हम सरेंडर कर लेते हैं तो सब समझ आ जाता है. सो आफ्टर दैट ये जब समझ आया और जर्नी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी मोडालिटीज की, टैरो, न्यूमरोलॉजी, और मैंने आपको बोला भी था यू आर ग्रैंड मदर टू मी बिकॉज प्रियंका इज माय टीचर एंड That's विथ योर ब्लेसिंग आप ही का ही yes. फ्लो है, आप ही की कोई नॉलेज हमारे अंदर फ्लो कर रही है, एंड आई एम ग्रेटफुल. Yeah. एंड फिर धीरे धीरे जर्नी में जैसे स्टार्ट हुए तो कोविड से पहले मैंने कोर्स किया था थेटा हीलिंग का, जिसमें कि डीएनए के बारे में बताया था. एंड जो वो कोर्स था, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कोर्स. वियाना स्टेबल कराती हैं, अमेरिका से होता है. एंड आफ्टर इन कोविड मेरे पास ऐसी चीजें आई हीलिंग के लिए, और मैं हेल्थ हीलिंग से थोड़ा अवॉइड करती थी हेल्थ हीलिंग. एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस मुझे ऐसे लोगों की हीलिंग आई जो कोविड से पेन में थे. एंड एट दैट टाइम व्हेन आई गॉट दिस कि अगर हम डीएनए में जाके, क्योंकि मैंने वो थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा था, डीएनए में जाके बिलीफ सिस्टम्स को क्लियर करते हैं तो जो हमारी पार्ट ऑफ बॉडी वीक होते हैं उस बिलीफ सिस्टम से हम उसको क्लियर कर सकते हैं. सो बिलीफ सिस्टम हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम जो पूरा जीवन देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे आसपास तौर और तरीके होते हैं, ऑल दैट एनर्जी गोज इनटू आवर ब्रेन. उसके बाद डेफिनेटली हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, आवर ओन प्लैनेटरी इफेक्ट भी होता है. हमारे प्लैनेट्स भी हमें कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहे होते हैं, जो कि हमारी नॉलेज हमें आती है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू. सो ये जो सारी ट्रेनिंग्स होती हैं हमें एक तरह का इंडिविजुअल बनाते हैं. अब वो हमारी चॉइस कई बार होती है, कई बार नहीं भी होती, क्योंकि कर्मा, कार्मिक लेसन्स होते हैं. So DNA scanning is a way to scan, to enter into your aura, go to that part of your body and understand what is happening in that particular cell, which is known as master gland या master cell of our body, जो कि pineal gland में होता है. pineal gland में एक छोटा सा सेल होता है जिसको कि हम मास्टर सेल कहते हैं, और हमारी बॉडी के हर पार्ट को रेगुलेट करता है, वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री एक्शंस को,
हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे आसपास के ऑरा को, हमारे सारे अफेक्ट्स को. सो यू नो, टू एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एनर्जी, हमें अपने क्लाइंट को इस वेव में, एक ब्रेन वेव में रखना पड़ता है, जहां हम उसकी ब्रेन वेव के साथ मैच करते हैं, एंड देन वी गेट इनटू दैट एनर्जी थ्रू ऑरा. जैसे आज हम जूम कर रहे हैं, सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन अस. वाईफाई है जिसकी वजह से हम कनेक्शन में रहते हैं. एंड देन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्हाट आई एम स्पीकिंग, इसका मतलब माई ऑरा इज स्पीकिंग टू यू. अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, इसका मतलब मेरा ऑरा और आपके ऑरा का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, और वो कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है. सो इट इज अबाउट फर्स्ट कनेक्टिंग विद द ऑरा एंड देन कनेक्टिंग विद द एनर्जी विच इज हैपनिंग इन मास्टर ग्लैंड. तो हम एक प्रोसेस के थ्रू हम उस एनर्जी के अंदर एंटर करते हैं, और डायरेक्टली जैसे ही एनर्जी में जाते हैं, ये प्रैक्टिस से आता है डेफिनेटली. और मतलब कोविड में मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, दिन रात में ये करती थी. दिन के मैंने सेशंस 1-on-1 लिए थे बहुत सारे, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डाउनलोड्स आने शुरू हुए कि इसमें कैसे और अंदर डीप जा सकते हो, कैसे आप समझ सकते हो. एंड जैसे ही आप उस ग्लैंड के अंदर एंटर करते हो थ्रू योर एनर्जी, आपको फटाफट बिलीफ सिस्टम समझ आने शुरू हो जाते हैं. इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी एनर्जी मुझे बता देगी कि कहाँ प्रॉब्लम है और उसको हील भी कैसे करना है, क्योंकि हमारी सोल को, हमारी एनर्जी को पता होता है कि सॉल्यूशन भी कहाँ है. राइट? सो इट इज अ प्रोसेस वेयर वी एंटर इनटू द एनर्जी, पुट व्हाट इज नॉट वर्किंग, मतलब वो उठा लेते हैं, हम उसको रिलीज करा देते हैं, एंड वी सिंपली स्टार्ट इंस्टॉलिंग राइट थॉट प्रोसेस. इमीडिएटली वो मास्टर सेल में ही जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता, उसमें कंफ्यूजन नहीं आती, और आपकी ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन वैसा ही करना शुरू हो जाता है. सो इट्स अ वेरी इमीडिएट एंड डायरेक्ट प्रोसेस. चाहे वो प्रोसेस एफर्मेशन से स्टार्ट होता है, चाहे वो प्रोसेस ब्रेथ वर्क से स्टार्ट होता है, लेकिन आई फील कि ये जो प्रोसेस है, इट इज वेरी क्विक. क्योंकि कोविड में ना मेरे को जो केसेस आए बहुत क्विकली करने थे. सो दैट वाज द समथिंग जहां मैंने डाउनलोड्स रिसीव किए. और आई एम नॉट सेइंग इट इज माय थिंग, क्योंकि मैंने थेटा सीखा व्याना से, और वहीं से मेरे को डीएनए का समझ आया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. क्योंकि वहां मेरी इतनी प्रैक्टिस हुई कि आई जस्ट कैन अंडरस्टैंड कि आपका थॉट प्रोसेस कौन सा, ब्लॉकिंग बिलीव जिसको हम कहते हैं ना, व्हाट इज योर ब्लॉकिंग बिलीव, व्हाई समथिंग इज नॉट हैपनिंग टू यू, एंड हाउ यू कैन करेक्ट दैट. So it is DNA scanning. Or DNA is responsible for your happiness, your sadness, your growth, your failures, and everything. Believe me, it is just DNA. Yeah. So मेरी तो यही जर्नी है. That's fantastic. Very interesting. So how are you going to tell us about DNA scan? कैसे की जाती है? Step by step अगर Yeah. आप बताएंगे हम लोगों को. And then if you want, you can take somebody Definitely. from the group and, work on Yes. him or her. Yeah. So today, पहले तो मैं आपको steps बताती हूँ, लेकिन what I want to, जब हम डीएनए की एनर्जीज को एनहांस करते हैं, आप सब लोग एक स्पेस में हैं जो कि क्रिएट की गई है, एंड व्हेन आई विल स्कैन या व्हेन आई विल पुट दैट एनर्जी, आप लोगों को खुद भी रियलाइज होना शुरू हो जाएगा. जब हम क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो क्लाइंट को भी समझ आना शुरू होता है, यस दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, एंड वो रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं. सो स्टेप क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू जस्ट रिलैक्स, जैसे हम पीएलआर में करते हैं, किसी भी हिप्नोथेरेपी का प्रोसेस होता है, उसमें जैसे हम रिलैक्स करते हैं पूरी बॉडी को, एक एक पार्ट को, और क्लाइंट का जो फोकस है एक एक पार्ट तक लेके जाते हैं कि ये अब रिलैक्स है, इस तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स करो. एंड उस प्रोसेस के बाद we just take client to the higher dimension, to the theta wave. हमारी ब्रेन जो है उसमें वेव्स हैं, हम सबको पता है, अल्फा, बीटा, गामा, थेटा. सो वी आर टॉकिंग इन अ ब्रेन वेव जिसको हम बीटा कहते हैं, जो बहुत एक्टिव होती है, नॉलेजेबल होती है. गामा इज मोर एक्टिव, अल्फा इज मेडिटेटिव वे, एंड थेटा इज द वेव जहां पे आप ना तो मेडिटेशन से थोड़ा सा हायर लेवल होता है, लेकिन आप स्लीप में भी नहीं होते. यू आर इन टू मोर पीसफुल स्टेट ऑफ योर ब्रेन. वहां पे होल्ड करना इज अ प्रैक्टिस, कि जब आप वहां पे होल्ड कर सकते हो, एंड इस प्रोसेस में सिर्फ जो प्रैक्टिशनर है उसको उस ब्रेन वेव में रहना है, और अपने क्लाइंट को भी उस ब्रेन वेव तक लेके जाना है.
yes, sometimes clients का ध्यान इधर उधर होता है, scatteredness होती है, and that's perfectly okay because we are doing it, so we are holding that space, and that's perfectly okay. And we have to enter and we have to pick very quickly कि कौन सा belief हमको pick करना है, and that depends on the client's choice at that particular time. Suppose कोई relationship issue से गुजर रहा है, या कोई health issue है, या कोई financial issue है, एनीथिंग, सो हमें सबसे पहले तो पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर इशू पे लेके जाना है ताकि हम उस पे ही फोकस कर सकें, बिकॉज इट इज वेरी क्विक प्रोसेस। इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। वी हैव टू जस्ट एंटर, पिक द थिंग, क्लियर इट एंड इन्फ्यूज राइट थॉट प्रोसेस, एंड वी हैव टू कम बैक। सो इट्स अ स्कैनिंग वेयर आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन मेरे साथ बात करता है, और ये बहुत सारे हिप्नोथेरेपिस्ट करते भी हैं। So, but it is little quick in that way. So step by step, we take into that energy, we take into the light, and then we clear the energy and infuse new belief system. And इसके बाद कुछ भी प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार कई हीलिंग प्रोसेस के बाद हम लोग एफर्मेशंस देते हैं, स्विच वर्ड्स देते हैं, या पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस देते हैं। इसके बाद जब हम इन्फ्यूज करते हैं एनर्जी को, वो एनर्जी आपके साथ स्टेबल रहती है। मेडिटेशन के लिए अल्फा ब्रेन वेव इज बेस्ट फॉर मेडिटेशन, बट फॉर एनी काइंड ऑफ हायर हीलिंग्स वी प्रेफर थेटा। सो दिस इज द वे हम करते हैं, एंड ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हर कोई अपने लिए कर सकता है। इट्स अ वेरी न्यू एज मोडालिटी, जिसमें कि क्योंकि वाइब्रेशन अर्थ की वैसे ही क्विक हो गई हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हम इस एरा में हैं जहां हमें बहुत तपस्या करके कोई चीज को नहीं पाना, जरा सा अलाइन होंगे और जल्दी मिल जाता है। सो इन दैट वे वी आर वेरी ब्लेस्ड। हाँ, अल्फा इज बेस्ट टू meditate, for meditation. Yeah. So anyone wants to ask anything, please ask. Yeah, it's a starting of Satyug, I guess. Okay, let's have some questions on this DNA scan. So जब scan करती हो, so how do you exactly scan? Do you use your hands? Do you use your mind? Only Do brain you waves, use the only waves, and energy? waves are talking. Okay. It's not very, see, under it's not physical thing. जहाँ जैसे हम रेकी करते हैं, तो रेकी is very physical level of healing, which I feel रेकी is very, you can touch, you can give healing, but it is all about your higher chakra. तो आप हायर चक्रा से स्कैन करते हो और हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, एंड you just enter into the energy, enter into that particular gland. Yes, आपको एक साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। जब आप डीएनए कर रहे हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए, डीएनए दिखता कैसे है, डीएनए में जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं, क्योंकि डीएनए का भी हम 100% तो यूज ही नहीं करते। डीएनए में 46 स्ट्रैंड का बना होता है एक डीएनए, और उसमें से हम 6 या 7 स्ट्रैंड तक ही यूज करते हैं अगर हम साइंटिफिकली जाएं तो। सो वो कौन से डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं जिसे हमें चेक करना है कि कहाँ टूटे हुए हैं, कौन से रिपेयर करने हैं, और डीएनए टूटता कैसे है। हमारा हर एक चीज का वियर एंड टीयर होता ही है, हमें पता ही है। लाइफ इज ऑल अबाउट हम लोग जब स्ट्रेस में रहते हैं, पेन में आता है, कोई एंजाइटी होती है, कोई लॉस होता है, कोई ग्रीफ आता है, हमारा डीएनए रप्चर होता है। लेकिन हम उस पेन से, उस सैडनेस से अपने आप को रिपेयर फिजिकल लेवल पे कर लेते हैं, मेंटल लेवल पे कर लेते हैं, एंड समटाइम्स इमोशनल लेवल पे भी कर लेते हैं, बट डीएनए लेवल पे जाकर रिपेयर करना हम कभी सोचते ही नहीं है। एंड इसीलिए वो जेनेटिकली भी हमारे फ्लो कर जाती है एनर्जी, और पास्ट लाइफ से भी हम कैरी करते चले जाते हैं। जब हम डीएनए लेवल पे अपनी इस एनर्जी को हील कर लेते हैं, सो वी बिकम न्यू। सो दैट्स द वे डीएनए लेवल हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, क्योंकि पल पल में झटके हैं, पल पल में स्ट्रेस है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड it's a practice, it's not Anshuka, intuitive. before the DNA ruptures, will the aura start getting affected? Definitely, because So first the aura will get affected.
तो यस अगर आपको डेफिनेटली। पता चल जाए कि ऑरा अफेक्टेड है तो आप हीलिंग वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो आपको जब पेन, हमें एज अ ह्यूमन जब हमें पेन समझ आता है, वो हमें फिजिकल लेवल पे समझ आता है। हमें फिजिकली पेन स्टार्ट हो जाते हैं, फिजिकली हमारी वेल्थ कम होनी शुरू हो जाती है, एप्रिसिएशन खत्म हो जाता है, फिजिकल लेवल पे रिलेशनशिप डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, राइट। उसके बाद हमारा इमोशनल सेल्फ दुखी होता है, मेंटल सेल्फ दुखी होता है। सो यू नो ये लेयर्स में काम करता है। हमें पहले फिजिकल सेल्फ में दिखना शुरू होता है। तो वो ऑरा जब वीक होता है तो सबसे पहले आपकी फिजिकलिटी हर्ट होती है किसी भी लेवल पे। फिर वो चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी वेल्थ अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे आपकी स्किन हो, बॉडी हो, एनीथिंग। एंड स्लोली वो हमें समझ नहीं आता, और हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हमें। कई बार हम ऑरा को स्ट्रेंथन करते हैं, कई लोग कहते हैं ना हम डेली मेडिटेशंस करते हैं, डेली ऑरा क्लीन करते हैं, बट स्टिल इट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज वो जो पेन था वो ऑलरेडी सबकॉन्शियसली बहुत डीप जा चुका है। अब हमें वो पेन सबकॉन्शियस से उठाना है, क्योंकि डीएनए जो लेवल है वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करता है। यस, बिकॉज उस वो जो नेक में आपका पेन है, वो किस बिलीव की वजह से है, वो आपने कैरी क्यों किया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर वो किसी भी चीज से नहीं जा रहा। Is there an age limit for this, or can you do it on children as well? या चिल्ड्रन पे भी करते हैं हम लोग, एनी एज भावना, एनी एज। Okay. आपने हैंड्स रेज किए हुए, प्लीज आस्क मी। अंबिका, I want to ask something. या I don't know whether it is your area or right to like you know it or not, or is it true or not? कि जैसे अगर माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसका डीएनए बच्चा कैरी करता है। तो अगर हम मुझ में मैं अपना डीएनए हील कर लूं तो क्या बच्चे का भी डीएनए, चूंकि वो कनेक्टेड रहता तो वो हील होगा? डेफिनेटली, बिल्कुल। बिकॉज यू नो कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। हम जब हीलिंग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हीलिंग की भी अगर मैं बात करूं, जो हमारे नॉर्मल प्रोसेस हैं, चाहे मतलब रेकी हीलिंग हो, आप रेगुलर करते हो, या कोई भी हीलिंग करते हो, नॉर्मल प्रोसेस भी हम कहते हैं व्हेन वी स्टार्ट हीलिंग अस, वी स्टार्ट हीलिंग आवर जनरेशंस, यू नो। यस। तो डीएनए में क्विक हो जाता है, और वो आपके बच्चे का भी हील करेगा, और आपकी मदर के भी पेन को हील करेगा या दैट इज व्हाट आई ऑटोमेटिकली। वांटेड टू आस्क कि अगर बच्चा ग्रोन अप ही हो गया है तो भी वो इट विल हेल्प हिम इफ यस आई यस, हील माई सेल्फ। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। बिकॉज ओके। यू नो आप उसको रेगुलर एनर्जी फ्लो कर रहे हो, देयर इज एन एनर्जी कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, राइट। राइट। मे बी आप थैंक पहले यू सो हील मच। होगे हंड्रेड दैट इज परसेंट सो। हाँ, मे बी यू विल हील योर सेल्फ फर्स्ट 100% एंड देन सेंड हीलिंग। दैट्स अ प्रोसेस। क्योंकि मैंने कई बार जब हील किए हैं, जैसे एक दो केसेस आए, उनका बेबी नहीं हो रहा था, वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो हमने थ्रू एनर्जी उनकी मदर को हील किया, एंड देन यू नो शी गॉट प्रेग्नेंट। सो इन वाह। दैट वे ये काम करता है। या ओके। थैंक यू सो मच। मैम, मैम उनके बेबी क्यों नहीं आ रहे थे? क्या वो मेडिकली ठीक थी? मेडिकली बिल्कुल परफेक्ट थी। और अगर अच्छा, मेडिकल भी ब्लॉक होता है, सी अंडरस्टैंड, मेडिकल भी ब्लॉक होता है, तो भी वो वहां से हम हील कर सकते हैं, यू नो। तो अगर एग्स कम है, अगर एग्स कम है तो वो भी ज्यादा हो जाएंगे क्या? बिकॉज देयर इज अ बिलीव ना कि वाई एग्स क्यों नहीं बन रहे, देयर इज ऑल्सो अ बैकग्राउंड बिलीव वर्किंग ऑन दैट। वो तो मैम, वो तो जब गर्ल टेक बर्थ तो कुछ लाख एग्स के साथ वो बर्थ करती है, 2.5 to 4 लाख के बीच में। और इवन जब वो 1 month 2 month 3 month की बेबी होती है तभी उसके हर महीने एग्स जाते हैं, नो मैटर पीरियड्स हो या ना हो। तो हर एक सर्टन एग्स के साथ होते, तो हम एग्स भी ज्यादा बना, कुछ कुछ चीजों में ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें ये चीजें वर्क नहीं कर सकती? सी अंडरस्टैंड, सबसे पहले सिर्फ आपका ट्रस्ट, इफ यू आर नॉट
trusting the energy, then energy is not going to work for you, first of all. And जो आप बोल रहे हो ना कि एक बच्चा जैसे पैदा भी होता है तो वो अपनी माँ की मदर की वूम में होता है और उसका बच्चा भी वहां पे होता है, हम लोग ये कहते हैं ना 3 वो करते हैं कैरी। तो अगर मदर ने कोई पेन देखा है, अगर मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग देयर चाइल्ड उन्होंने कोई पेन देखा है, तो बहुत लाइकली देखा जाता है कि बच्चे प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो उस मैम पॉइंट रिलीज करना सबकॉन्शियस बिलीव को, एंड जैसे ही वो सबकॉन्शियस बिलीव रिलीज होता है, उनको पता है क्या प्रोसेसेस होते हैं ये, राइट उनको डॉक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, राइट मेडिसिन मिल जाती है, मेडिसिन लगनी शुरू हो जाती है। इट्स लाइक दैट। जैसे मैं एक रेकी मास्टर हूँ, तो मैं कोई 4th स्टेज कैंसर का पेशेंट है, तो मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बस इतना कर सकती हूँ कि मैं शायद उसके पेन को कम करूं या See, जो भी है। understand? हाँ, मैं यहाँ पे तो ये बोल रही हूँ, we are not gods, we are या just channels, you know, life and या death is not in our hands, but या अगर हमें कुछ help मिल रहा है यूनिवर्स से to, you know, heal something, we should acknowledge it first of all. And अगर आप कैंसर की बात करें ना, मेरे को याद है किसी की बायोप्सी हुई थी, यहाँ पे इतना बड़ा डीप कट था और डॉक्टर ने कहा ये ओपन ही रहने दो क्योंकि ये कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। और उनका यहाँ से ऐसे बायोप्सी होके वो इतना मोटा था और वो अपनी मदर की कैंसर की हीलिंग ले रही थी, तो वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात करती थी। तो मैंने कहा ये क्या है, कहते हैं ये डॉक्टर कहता है मैंने किसके स्टिचेस क्यों नहीं लगवाते, बहुत गंदा लगता है, इवन लिक्विड निकल रहा था कुछ। तो कहते डॉक्टर कहते हैं ये कुछ ऐसे ही अपने आप हील होगा। वो हील नहीं हुआ था पिछले 6 महीने से, एंड उन्होंने 5 सेशंस लिए थे डीएनए, इट वाज लाइक जैसे स्टिच नहीं हो जाता स्किन, ऐसे हो गया था। एंड आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड as a human. I also, sometimes I also surprised about, ये सारी चीजों में कि ये कैसे हो जाता है, बट वो हो जाता है उस टाइम when we are in energy, वो हो जाता है काम, बिकॉज हमें हायर एनर्जी से गाइडेंस मिल रही होती है। Who else would like to ask a question? Nanda ji? Yeah. So for me, it is 1 second. I have 2 questions. Yeah. So since I've spoken about Reiki and what you are telling, the healing process and all is sounding quite similar to what Reiki is and how it works. So when we are healing on the all 4 levels, so the same thing you are talking of, like it will heal. And then aura, when we talk, and as Trupti ji said, if anything touches the aura first. So if our aura is strengthened, then as it is, it just depletes the aura, whatever is coming from outside. So it doesn't reach the physical self. But apart from that, my second question was that when you were talking of the healing part of it, for me, it sounded very much close to hypnotherapy, where we go and we plant the thing and then we don't need to look at it again and again. So is it similar to that, what we are doing, the process? The process of taking a person is hypnotherapy का process है, but you must understand physicality of body. And when it comes to Reiki, sometimes we have strong aura. Sometimes our body is perfectly okay, but still we are suffering with some internal pains or stress because we have that program done by our subconscious brain, and now our DNA is programming, that particular belief on our physical level. So in those cases also, this process helps to change that belief system. Secondly, definitely, once we understand the formation of DNA, once we understand how it heals, you immediately, once you enter into the energy, you can clearly see it, that it is, it is healing. So yes, it is very similar to hypnotherapy, yet it have difference in, giving commands and, seeing the person as a healing entity. At that time, things are happening in front of you and it is very immediate. With 1 or 2 sessions, you can see difference. So this again is like when we are a lot of us are into PLR. So when we take to the PLR system, then again in just 1 session, it might heal. Family, Yes, definitely. like when we do family constellation, just 1 session, everything heals, and 4 generations. Yes. So yes. So apart from that, like, because,
I am into Reiki. So when you talk again and again of Reiki, so everything is sounding very No, similar to Reiki. yeah, Reiki is a base of every human. What I feel, because Reiki works on very physical level, and अगर हमारा physical tool ही ठीक नहीं है, we Sorry cannot to do anything. interrupt. Sorry to interrupt. We can give It it doesn't work distance. on physical. It works on your physical, No, mental, you are emotional, not. and No, spiritual. you are not understanding why I'm saying physical. It's not physical body. Okay. Like what we are experience on this physical plane, Reiki helps a lot, whether it is emotional level, mental level, physical level, or spiritual level. Right. Whatever we are experiencing on this earth, Reiki Yes. is the base. I'm talking about that physicality, not a physical body. Okay. Yeah. See, understand, if you are feeling yourself as a happy, emotional person, you are feeling it on very physical level. You understand? लेकिन कई बार हमारे डीएनए की जो एनर्जी है वो फिजिकल लेवल पे नहीं नजर आती, वो बहुत डीप होती है, एंड समटाइम्स वी आर वेरी अनअवेयर ऑफ वो वाली चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं होता. या मैम, ऐसा लगता है जो आप बोल रहे हो ना, वी आर लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड, बट यही है कि रेकी में भी यही होता है कि हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से जा करके और Yeah, all of उसका it डीएनए में is. नहीं, Sorry. और Yeah. उसका इवन पास्ट लाइफ का भी ट्रॉमा और बहुत चीजें Yeah. खत्म करते हैं. रेकी में भी नहीं, मैं यही यही चीज बोल रही होती हूँ, है. रेकी हमें एक्सपीरियंस कराती है फिजिकल प्लेन पे, फिजिकल प्लेन अर्थ पे. हम अर्थ पे हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है हैप्पीनेस, सैडनेस. कई बार आपने देखा होगा, कई लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है, बट देयर इज समथिंग which is missing and I don't know how. But Anshuka ji, that is where then Reiki helps you. It does heal very in a very subtle manner. So what I'm trying to understand is, because if being into different modalities, if tomorrow I feel like learning, what is it that why should I learn this particular? Because if Reiki is giving, PLR is giving, if my family constellation is giving all this, then how does it make sense to learn this modality and add it to my thing? Yeah, because it will add to, ये जब हम डीएनए करते हैं, you understand when we are doing Reiki, because I'm also Reiki grandmaster. Okay, so when we are doing Reiki, we understand person's perspective जो कि उसको समझ आ रहा है, but do dive deep into the body and understand deep layers जो कि वो बहुत deeply subconscious से लेके आ रहा है. पीएलआर के लिए आपको एक सेशन चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि ये सेशंस आपको हेल्प नहीं करते, ये सारे सेशंस हेल्पफुल हैं, एवरी मोडालिटी इज हेल्पिंग, बट similarly DNA scanning is helping, and it is little quick. In 30-40 minutes, you are giving results. Yeah, because this, when I did my hypnotherapy, It's like that. this is the thing, it was that you just go, you plant it, and then it's done. The person is healed immediately, whatever the issue. So Yeah. that's why I thought it was very That's what I'm similar saying. to hypnotherapy. The process is hypnotherapy, and then once you understand the formation of DNA, how that DNA is moving, how that DNA is working in each and every cell of your brain and body, how that cells are, creating good healthy cells, वो जो देखना होता है और वो जो होना होता है एकदम immediate होता है. कोई modality खराब नहीं है. I'm not Not talking at all. कि ये No, All no, of no, चीज them no, है. no. work. We are All also of not them work. talking to that. We No, are no, no. like, One second, one we are second. very, I'm yes. saying that this is also an additional thing Right. where you Yeah. can enhance your healing, energy. Yeah, Because that's what I'm trying to understand, that if I add yeah. it to my healing Because मैं भी practice. रेकी is something जो कि मैं रोज करती हूँ अपने साथ, और मैं अपने सब लोगों को बोलती हूँ रेकी के बिना यू कैन नॉट लिव ऑन दिस अर्थ. क्योंकि मैंने फिर बोला है, रेकी इज एन एक्सप्रेशन जो कि हमें फिजिकलिटी में एंजॉय कराता है, वेदर इट इज बॉडी, इमोशन, मेंटल लेवल, सोल लेवल. रेकी हमें फिजिकल लेवल पे बहुत हेल्प करता है, बट कई कई चीजें नहीं समझ आती, एंड आई फाउंड इन डीएनए, जब स्पेशली कोविड में, कि जब मैंने एक बारी, मुझे अभी तक याद है, देयर वाज अ एक्सपीरियंस, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं खुद शॉक हो गई थी. आप कोविड में आप स्कैन कर रहे हो किसी को, ठीक है, एंड वो जो लेडी थी वो हॉस्पिटल में ले जाती थी वीवीआईपी में, बिकॉज शी वाज वेरी पावरफुल इन हर ओन वे. तो वो हॉस्पिटल में घुस जाती थी, वीडियो कॉल कराती थी, एंड मैं जब स्कैन करती थी तो मैंने उनको बोला, स्कैनिंग के बाद, हीलिंग के बाद, कि आपके हस्बैंड बहुत स्मोक करते थे क्या? क्योंकि मेरे को बहुत टार दिखा उनके यहाँ पे चेस्ट पे, कि ये टार दिखा.
और मुझे ऐसा लगा कि वो उसकी वजह से वो ब्लॉक था, तो वो मैंने क्लियर किया है। तो कहती वो तो टी टोटलर है, वो तो चाय भी नहीं पीते, स्मोक, मतलब टार की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आई वॉज लाइक ठीक है, और उनको भी लगा इसने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि हम ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही बोल दिया। एंड नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि जब डॉक्टर ने वही सेम चीज स्कैन किया, तो डॉक्टर ने भी उनको सेम चीज बोली। उनका स्कैन हुआ होगा कि टार बहुत है, ये स्मोक बंद करनी पड़ेगी इनको। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे हस्बैंड स्मोक करते ही नहीं है। सो ड्यूरिंग दोज डेज मेरे को रियलाइज हुआ कि इट इज वेरी क्विक, इट इज वेरी इजी, एंड ये बहुत जल्दी क्लीन करती है बॉडी को, क्योंकि डीएनए आपका एकदम से क्लीन होता है। बिकॉज व्हाट वी आर लिविंग आवर डीएनए। जो भी हमारे डीएनए में बिलीफ वर्क ट्रेन हुआ है, हम वो जी रहे हैं। तो वो उनका एंगर था जो एज अ टार यहाँ पे इकट्ठा हुआ हुआ था। सो इट्स वेरी क्विक। So, Anshuka ji, to understand this, when you scan, you said you saw the tar over there. How did the healing take place? That was just a vision and that you could sense and you saw it, but then how was it healed at that particular moment? बिकॉज जब हम उसके एनर्जी में जाते हैं, वी डू द प्रोसेस, जो कि प्रोसेस है, वी पुल दैट एनर्जी अवे, वी हील दैट विद पर्टिकुलर एनर्जीज जो कि डीएनए के अंदर होती हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर एनर्जी से वो हील होना शुरू हो जाता है। सो So दिस इज अ means that होल when प्रोसेस। when you did that, you scanned and then you felt it was there and then Yeah, you cleaned it up, cleared it up, right? it's like you enter into the master cell, you see what is happening first, तो belief work हो गया। On physical level, you scan one by one of body, each and every body part. So you must understand about each and every body part. जैसे हमें रेकी में भी बताते हैं, हम किसी में भी देखते हैं, तो इसमें भी हम एक एक बॉडी पार्ट को हमें पता होना चाहिए, हमने उसको विजुअलाइज किया होना चाहिए। बट जहां डीएनए का होता है, वहां पे क्या समझ आता है, यहाँ बिलीव वर्क क्यों बैठा है, क्यों इसके लंग्स अफेक्ट हुए, लंग्स क्यों इफेक्ट हुए। एक और केस, क्योंकि कोविड जिनको हुआ था, लंग्स अफेक्ट हो रहे थे सबसे ज्यादा, चेस्ट एरिया, एंड लंग्स आर रिजेंटमेंट। लंग्स क्यों अफेक्ट होंगे, जब आप रिजेंटमेंट रखते हो किसी के लिए, एंगर होता है, तो लंग्स पे अफेक्ट आता है। सो ये तो बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, सबको पता होंगी। सो मैंने किसी का केस लिया, और उनसे मैंने जब ये पेन देखा और डीएनए में गई, तो डीएनए से मुझे पता चला उनको बहुत सारी रिजेंटमेंट है अपनी मदर से। और मैंने जब उनसे बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने वही चीज बोली, और वो हॉस्पिटल से मेरे साथ फोन पे बात कर रहे थे। एंड उन्होंने अपने बचपन की सारे गिले शिकवे उस रात को अपनी मदर के लिए जो भी थे मुझसे बात करी, और 2 दिन के बाद ही वॉज परफेक्टली ओके। वो रिजेंटमेंट निकल गया उनका। सो हमारी बॉडी का कोई भी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या एनी पार्ट हमारा बिलीफ सिस्टम है, एंड डीएनए में जाते ही आप उस बिलीफ सिस्टम को इमीडिएट पकड़ते हो। सो यू डोंट हैव टू गो लेयर बाय लेयर। लेयर बाय लेयर मीन्स पहले आप एक एक चीज पे नहीं जाओगे, आप इमीडिएट उसी पेन पॉइंट पे हील कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी से कम या ज्यादा है, बट फॉर मी इट इज वेरी इजी एंड क्विक। Right. Thank you. अंशुका जी, What Anshuka is saying is that अंशुका जी, जो भी therapist है, that person has to be highly, intuitive. Am I right? You have to be highly intuitive because you are scanning. तो आपको एक intuition level आपका बढ़ाना पड़ेगा, and your ability to visualize in the mind what you are scanning. Am I right, Anshuka? Yeah, but That is more towards, what is important. yeah, intuition plus practice. हाँ, नहीं, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, बट आपको इंट्यूटिव होना पड़ेगा पहले तो, राइट? इन दिस डीएनए स्कैन, आर यू गोइंग फ्रॉम चक्रा टू चक्रा? नो, वी नॉर्मली हम चक्रा टू चक्रा नहीं जाते, तो हम कैसे बॉडी जाते पार्ट्स हैं? में जाते हैं। लाइक फर्स्ट हाउ हमने यू बिलीव गो फ्रॉम पकड़ा, टॉप टू बॉटम? यू विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप? टॉप टू बॉटम, टॉप टू टॉप टू बॉटम, बॉटम, ओके। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। बट हमने बिलीव पकड़ा एंड बिलीव के साथ एसोसिएट किया उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को, सो आई वो वांट कहाँ टू से आया, आस्क, और उस बॉडी ऑर्गन। मैं स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहती हूँ, आई थिंक दैट्स व्हाट द ग्रुप वांट्स, कि जब आप एज Okay. अ फैसिलिटेटर, आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है, लेटा है, कैसे है आपका क्लाइंट? देखो, वो आराम से बैठा है, वो लेट भी सकता है, आराम से चेयर पे भी बैठ सकता है, एक्टिवली भी बैठ सकता है। ओके, आप उनके And सामने बैठेंगे, उनके पीछे बैठेंगे? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू सामने, अस हाउ द थिंग इज गोइंग टू बी? okay,
सामने बैठेंगे? मेरे बिल्कुल सामने बैठेंगे, जूम पे होते हैं हम लोग आजकल, तो जूम पे है। अगर ऑफिस में Right. आते हैं तो ऑब्वियसली मेरी चेयर उनकी चेयर बिल्कुल सामने होती है। ठीक है। देर इज नो नीड टू कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं होती इस काम Okay. के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकली यू नो ऐसे हाथ पकड़ना है या समथिंग है। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू होल्ड द हैंड्स, अगर वो फिजिकली हैं तो यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं। देन वी स्टार्ट टेकिंग दैट पर्सन टू द थेटा ब्रेन वेव। थेटा ब्रेन वेव में ले जाके हम लोग उसके एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। So, जैसे ही Anshuka, हम, to take या the client into the theta wave, you will give some kind of hypnotic suggestions, right? यस यस, जैसे डेफिनेटली कि आपको डेफिनेटली। रिलैक्स करना है, आपकी बॉडी, या what kind of suggestions do you give? Can you explain? सो आई कैन शो यू, एंड अगर आप किसी के ऊपर मेरे को शो करना Wonderful, है, अगर, wonderful. That's what we या want. A demo आई can be कैन डू given. डेमो दैट, डेमो दे सकती हूँ मैं। Anybody who'd like to go for a demo who's open enough to be honest. Huh? So Okay. honesty important hai. Any one person Yeah. can go in for the demo? I can do it, ma'am. Kaun Ankush. hai ye? I can do it, ma'am. No, who's the first person who said? Ankur, ma'am. Ankur. Ma, there'll be Okay. many. Ankur, There'll be many okay, who'll try. let's go with Ankur. Ankur. So what I'm going to do is, we are all going to go off the video. We'll have Anshuka and Ankur only on the video. Ankur, can you put your video on? Yes, he has put his video on. इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से observe कर पाएंगे how the process is taking place. Okay? So let us all go off video, please. And Ankur and Anshuka will only be on the screen. So So बहुत you अच्छा can even रहेगा. spotlight us. अब ये मुझे आता नहीं. अच्छा, okay. कैसे spotlight करूं मुझे बताइए. From the three dots, yes. Ma, on the right side, on both the people, for Anshka ji and Ankur ji, they'll be on their windows. They'll be Spotlight right for side will be a everyone. spotlight. And now Yes, add yes, ma'am. spotlight. Now And add add spotlight. spotlight on it. Okay. Yeah. Okay. So hi Ankur ji. I am. Yeah, namaskar. So let's start. आप आराम से बैठ जाइए जैसे भी है, and do not cross yourself. Just be open and relax. Any particular करना है या just I do scanning and some simply, or any particular point you want to understand or particular healing you want to take? Ma'am, about job? About your job. Right. So what is happening? Ma'am, there is a pattern that my job always go on a peak and then suddenly start coming down and I have to leave the job, or people will ask me to leave the job because they cannot kind of Okay, got it. yeah, money. Okay. Okay, so just close your eyes. And relax yourself. I want you to focus on your breath. Simply focus on your breath and allow yourself to relax. Try to focus on your breath and be relaxed. As you are focusing on your breath, you are becoming more and more relaxed, more and more aligned. Try to allow each and every thought, each and every anxiety to go away. And be here in this present. Just allow yourself to be here.
And now I want you to simply focus on your feet, your legs, your thighs. Simply focus on your back, your shoulders, your chest, your stomach. Focus on your arms, your neck, your face. Focus on yourself and you are relaxed. You are totally, fully relaxed. And now I want you to imagine, feel a beautiful energy from the center of the earth is coming up. Just imagine that this energy is traveling up through you. Just feel this energy is creating a beautiful ball of light just above your head. And this ball of light is taking your consciousness, taking you up away from your space. Imagine you're moving up from your space, up above the room, above the building. You are going up above the sky, above the earth, above the universe. Feel yourself. Simply imagine you are going up, up, up. Going up above the lights, above the golden rainbow. You are going up above all the lights, all the mists. You are flowing up. Feel yourself flowing up. And you are going into a beautiful energy, energy of white light. There's nothing else, just light. And you are going up in the higher vibration of the light. Focus on my voice. There's nothing, just my voice and light. Feel yourself in this white light. And you are flying high above the light into the higher dimension of energy. Okay, Ankuji, can I scan you? Can I scan your energy? Yeah. Anything, any pressure which is hitting you hard right now? You mean in the body or in life? In life. Uh, Finance, yeah. Hmm? Finance. Yeah, you have pressure, right? Yep. So when I say word pressure, Mhm. what comes first in your mind? I feel that What? I feel that someone is pushing me in the corner. That is the pressure. When was the first time you felt that
you are cornered, or someone is pushing you. First time in the life, go back. What was your age? How old were you? When you got this feeling? Whatever comes first, please let me know. Whatever comes first, just let me know. Whether you feel it is right or wrong. I don't see any image first time, but what Yeah. I see as of now is that Yeah. I am kind of in this age only. I am kind of scared, and I'm sitting in a corner. That is the image that is coming. Nothing from the past. Yeah. Yes. When was the first time when you felt the energy of this feeling of, scary feeling? Just go into your past and connect. पहली बार कब डर लगा था इतना ज्यादा? When was the first time? जो भी सबसे पहले नंबर आ रहा है, anything which is coming first, please let me know. What is coming in your thoughts, brain, The mind? first thought that is coming, that this kind of feeling of being scared, Yeah. is happened in my post marriage, when kind of a lot of court cases were going on. So because there was a pressure, there is a because at that time the laws were very strict for the men. So I feel that feeling is coming up at that time. When you say that, when I feel or felt most scared, that is the time I feel that feeling. Now I want you to go little more towards your own past, Mhm. more younger time, Mhm. and see when was the first time when you were fearful, you were scared. Go towards your more younger time. I see one image when I was in post graduation, and I used to stay in a place which is a rented accommodation, and I was on the road toward my room, and I feel that someone is following me, and that is like, it's like it's a straight road, but I felt that someone is following me, so I kind of kept running and want to reach to my room as soon as possible. That is Why? the Why you wanted to reach to your room as soon as possible? because I felt that someone is like maybe a kind of ghost Okay. was trying to Yeah. follow me or something like that. Yeah. Yeah. So first time when you were scared of ghost in your life, just go back to more, to younger times. First time when you felt the feeling of ghost or having ghost or anything which is equally scary. It's a feeling because my hometown is very adjacent to my hometown. It's like five step
apart from my house, there is a temple, big temple, and there is Yeah. a tree of people tree, actually, banyan tree. Yeah. So at night when we sometime go, so we feel as a small child, we feel very scared to be around that tree or around that area, but because it is very How near old? to our house. Yeah. How old were you at that time? Maybe around 12 or 13, I can guess. 13. Yeah. So, what was your feeling during that age, seeing that tree? Feeling is not of the tree, but I heard, it's like, No, I'm just talking about your feeling. Just go into that energy and just feel how you, how you were feeling that energy of fear energy. So just feel that feeling. क्या फीलिंग होती थी उस बच्चे को, उस पेड़ को देख के, उस डर से? What was your feeling? it's kind of thinking, like Sinking, sinking, you say that. Yeah. sinking feeling. So now I want you to just scan yourself and feel this sinking feeling right now in your body. I just want you to scan this sinking feeling in your body right now. Mhm. कहाँ हो रही है ये sinking feeling? In this area, chest. Yeah. Just scan your chest area, your stomach area, and lower abdomen. Just feel कहाँ सबसे ज़्यादा है. Where is the root of this sinking feeling? Yes, stomach, no, abdomen here. Yeah. Just connect with the energy. And feel, is it sounding right that I am sinking? Is it sounding right to you? I am sinking. No. I am not protected. No. I am unprotected. I feel heavy. It's a lot of Yeah. weight I'm carrying. Yeah. So connect with this feeling and feel that I am unprotected and carrying all the weight. I am tired. Yeah, this is the right. I'm tired here. And you are also feeling unprotected? No, I'm feeling tired and it's so heavy. And sometimes, this tiredness is giving you the energy that leave everything behind. That's correct. And you just want to be free. Yes, that's correct. You want to be free because you want to secure yourself. That's also correct. Yeah. So in a way, you are not feeling secured. Yeah, you can say that. Yes. So is it sounding right that I'm not secured Correct. and I'm tired? Yes. Okay, can I pull this belief system from your cells, your DNA, that I'm not secured and I'm tired? Can I pull this belief system, Yeah. send to the Yes. God's light and change
to the new belief system that I am protected and secured by the creator of all that is. And I understand my strength. Can I do that? Yes, yes, you can. Connect with the energy, connect with the light. Priyankuji, can I tell you that you are secured, you are protected by the creator of all that is? Can I tell you how it feels to be secured and to be protected by the creator of all that is? Can I tell you the feeling of unconditional love, protection, and security from creator of all that is giving you strength in each and every cell of your brain and body. And you are receiving this strength right now in each and every cell of your brain and body. Can I tell you that creator of all that is protecting you, and you have all that blessings from creator, strength from creator in each and every cell of your brain and body? Can I tell you how it feels to have that security, protection, and love of creator of all that is? Can I tell you how it feels to live your daily life with this protection, security, and unconditional love of creator of all that is? Can I instill these downloads into you? Yes, please. Is it sounding right that I'm lonely and nobody is there to take care of me? Mm, lonely is okay, but people are there to take care. Is it sounding right that I am lonely and nobody is understanding me? No, people understand. Is it sounding right that I'm lonely and I'm not able to receive emotional support? No, first part is still okay, not the second one. Okay, that's perfectly okay. Okay, is it sounding right that I am feeling lonely and I still need to express my desires? Yeah, that's better. Okay, can I pull this belief system from each and every cell of your brain and body and send to the God's light? And can I instill the new program that you can express yourself fully and completely as creator of all that is with you, and you are supported by creator of all that is? Can I tell you how it feels to express yourself fully and completely, how it feels to express each and every part of your emotion fully and completely, and how it helps you to grow in your material world? Can I instill these downloads into you? Yes, please.
Can I tell you how to express yourself, when to express yourself? And you can live your daily life by expressing yourself with love and unconditional love and peace. Can I tell you how it feels to live this life beautifully by expressing yourself with love and harmony? Can I instill these downloads into you? Yes, please. Can I instill the download of trusting your expression, that you are expressing yourself? You know that you are trusting your expression and your expressions are creating success for you in this life. Can I instill these downloads into you? Yes, please. Can I align your chakras and align your throat and sacral chakra? Yes, please. Can I balance your brain chemicals? Yes, please. Can I fill each and every cell of your brain and body with unconditional love and instant healing of creator of all that is? Can I do that? Yes, please. Can I fill your master plan, your soul with unconditional love of creator of all that is? Yes, please. I want you to take a deep breath, inhale and relax. And just take a deep breath, inhale and relax. One more time, take a deep breath, inhale and slowly, just feel your body, feel your heart, your stomach, and slowly come back. Yeah, you have water, तो please आप थोड़ा सा पानी पी लो. Yeah. Are you okay, Ankur ji? Yes. Yeah. How you are Thank you so much. feeling? Yeah, it's very nice. Are you Very feeling good. relaxed and happy? Yes. I think I can see the shift that happened. Thank you. Yeah. So I Yeah. hope अब जो एक्सप्रेशन आएगा ना आपकी लाइफ में वो आपकी जॉब में फाइनेंसेस में ग्रोथ लेके आएगा because there was a non-alignment of your desires and expression Okay. due to Okay. that fear. Yeah. I Okay. hope it will help. Thank you so much. Thank you Yeah. for my Yeah. taking Thank my you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. yeah. Okay. So that was wonderful. I think it explained a lot of the queries that were coming up in people's mind, right? Nanda ji, sabhi log jo thode se confused ho rahe the ki Anshuka, what is it? How DNA healing can be done? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था जहाँ पे हिप्नोथेरेपी का भी इस्तेमाल हो रहा है
विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और क्लाइंट इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. ये मुझे अच्छा लगा, है ना, Yes, ma'am. कि Yes, ma'am. क्लाइंट इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. आई थिंक जैसे जैसे अंशुका आपको गाइडेंस कर रही थी, यू वर काइंड ऑफ मूविंग, है ना, वी कुड सी दैट. Yes, ma'am. तो कुछ Yes, ma'am. कुछ बताओ, तुम्हें कैसा ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे अंशुका तुम्हें चीजें पूछ रही थी. Ma'am, one thing is I like the way she was not forcing the question. She was patient enough to find the right answer from me. So, like you said, that I was involved, which means that yes, my consent was involved at every stage. And I can, when she said that she is taking the belief out, I can feel that, in my body, because in my mind it is my mind was saying that because she's working with the DNA. So I feel, I think maybe because of that perception, so I felt that yes, something is she's taking out. And when she reached to the temple, when she drilled down and reached to the temple to see that, many things become immediately clear, because I felt the weight in the abdomen. And I I think I can relate that after that incident happened at under the tree, my belly start becoming big. So immediately I said, yeah, yes, that fear is sitting here. So now it's time for that fear to go out. So yes, I really like the way it's drilled down. And as a client, I feel I think two things. One, I'm involved, and two, the way um, she was very confident when she was saying that she's installing the belief. I really like that part, because in hypnotherapy we don't do that. We ask the people to say it and do it. But here is the difference, because she very confidently said that I am installing it for you. Correct. You already have done your work. Let me do my work, and I will install the belief in you. Correct. So She's I giving think a that direct suggestion. yeah, it's the direct. She's giving a suggestion. direct Yes, suggestion of what she's going to be doing, and she's taking Yeah. a consent. ये तुमने बहुत अच्छा कहा कि जो consent आप दे रहे हैं, so you are agreeing, so you are giving the yes response. जो हम kind of hypnotherapy में कहते हैं, give us a yes response. तो आपने जब yes response दिया, तो you're open and you're Yes. surrendering. And then obviously the therapist can install that, or whatever, she removed or she installed, but that can be done. So, and what I loved about you, Anshuka, is that when you were asking him various beliefs, like, are you feeling unprotected? Are you feeling unsafe? So when he said no, you didn't push it. Yeah, that's what I like. That was actually. very important. That was very important. कि आपका जो perception है as a therapist, that's not being pushed to the client. You're waiting for the client to say yes to what he feels is happening to him. तो वो जो है ना, slowly. So I think that was very good. And going back in time, as she did, to the earliest time, जिसको हम कहते हैं touchstone event बोलते हैं उसको. So when you go back to the touchstone event, the event where all that started, which triggered the whole process. So that of course has happened in also kind of regression, we do that. तो वो हुआ है. And I think बहुत ही simple तरीके से हुआ, which was very nice. And Shanti said, she took her time. So as a client, I'm sure you felt that, and you're expressing it also to us. Yes. I really felt that. I really felt that shift before I entered into the Zoom, and now I see that. I see that. So only difference is how she is aligning and how she is installing the belief. Right. For the people who are debating on the Reiki, Yes. so I'm also a Reiki master. I'm also a hypnotherapist. So there's a difference. Yes. It's a ये difference. जो है वो So भी base is clarity, clarity आ गई है. That Yes, ma'am.
It's basically, like I said, Anshuka, you're using hypnotherapy, then you're using certain statements, जो set statements है आपकी, which is actually coming from theta, I guess. वो जो statements तुम बोल रहे हो, creator की जो yeah, statements. so these statements are not my Yeah, I know. statements. Yeah. ये उनके डीएनए को चाहिए था, उनका डीएनए मुझे डायरेक्ट कर रहा था that I need this. Yeah. So this is the Okay. difference. Correct. Your energy is speaking to me. Correct. But in theta healing also, we have certain set statements. Certain statements होती है related to the creator, जो I Yeah, think yeah. बोलते Yes, हैं. yes, yes. So that is also there. हाँ. So, well, Yeah. I think it was wonderful, and we were raptly watching it. Everybody was watching it and learning. So, Anshuka, thank you so much, my dear. You were very open to do Thank you, the thank you. demo, or that shows how confident you are about your work. So, ये बहुत important है. एक Thank you, demo thank you, करना thank you. इतने लोगों के सामने आसान नहीं है. And Anshuka, you did it, my dear, and that's excellent. And Ankur, thank you for being the client. Thank you. I'm Thank you glad so that much. a male has volunteered to be a Yeah, client. I That's why did, yes, I yes. chose a male also, you know. Yeah. I I'm have a very happy. question. Yeah. Thank Yeah. you. Okay, now 1 or 2 questions, not more. Okay, we are Yes, running ma'am. out of time Ma'am, also. I just wanted to ask her कि ऐसे कहते हैं कि अगर मेरे को लामा फेरा भी करना है और रेकी भी करनी है तो कई बार कोई कुछ भी कर सकता है, तो कोई कहता है कि पहले रेकी करो फिर लामा फेरा सीखो. अभी मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या पहले थेटा हीलिंग सीखनी है और फिर उसके बाद इसको करें तो ज्यादा सही है कि इसे डायरेक्ट करें सीखें. Anshuka will नहीं, answer. ये डायरेक्ट कर सकते हो, ये डायरेक्ट कर सकते हो. See, understand. हेलो हेलो. Anshuka has 1 minute. Anshuka थोड़ा उसका नहीं चल रहा है ठीक से. इधर मेरे में भी प्रॉब्लम आ गया था. Now I'm removing all the spotlights. हाँ, spotlights remove कर लो. ऐसा कुछ नहीं है. Anshuka, I think, is got frozen. But आप कुछ भी सीख सकते. You can learn Reiki first. You can learn Lama क्या Fera मेरी first. आवाज आ रही है ना अभी? यस मैम. हाँ, अंशुका आप मेरा आंसर कर लो बेटा. हाँ जी, हाँ जी. सो यू कैन लर्न. आप कुछ भी कर सकते हो. आप थेटा से स्टार्ट कर सकते हो, डीएनए से स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन आफ्टर यू कैन डू रेकी, बिकॉज रेकी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकलिटी. मैं बोलती हूँ ये चीज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल बॉडी, इट्स अबाउट एंजॉयिंग दिस फिजिकलिटी ऑफ दिस प्लैनेट. एंड ये जो है ये थोड़ी डीप हायर हो जाता है, लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको पहले रेकी हीलर होना चाहिए या कोई थेटा. ये इट्स अ प्रोसेस जो कि प्रैक्टिस कराया जाता है. कितने दिन का प्रैक्टिस होता है? लगभग 6 महीना, 3 महीना, साल भर? डिपेंड ऑन अवर इंट्यूशन, अवेकनिंग, पावर. मतलब सी अंडरस्टैंड, सबसे इम्पोर्टेंट तो कोर्स ही ये 15 से 20 दिन के बीच में खत्म होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द फ्लो ऑफ कोर्स. फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल आता है, उसमें भी हम 10-15 दिन देते हैं बिकॉज प्रैक्टिस का होता है. लेकिन इट इज डेफिनेटली ऑन योर प्रैक्टिस. मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू गेट इनटू द एनर्जी. उतना ही क्विक हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एंड मैं जब ये करती थी, बाय गॉड्स ग्रेस हुआ मेरे साथ तो, कि मुझे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं सिर्फ थेटा, ये डीएनए कर रही हूँ, थेटा कर रही हूँ, डीएनए कर रही हूँ. सो इतनी प्रैक्टिस हो गई उस चीज की कि अब तो ऐसा लगता है कि ये मेरे डीएनए में हो गया है इंस्टॉल. हाउ इट्स इट लाइक इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैम? मतलब ये मैं डॉक्टर तृप्ति जैन से भी पूछना चाहूंगी उसमें. एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. आई थिंक सब कुछ Yeah. इंटरलिंक्ड है, लेकिन अभी अर्थ की फ्रिक्वेंसी इतनी फास्ट हो गई है कि वी नीड फास्ट हीलिंग्स. सो मे बी इसीलिए ये ज्यादा अब आगे आ रहा है. बट एवरी हीलिंग हैज इट्स ओन एसेंस. बाकी मैम बताएंगी, मैम ने तो देखा है. नहीं, जैसे कि देखो, कोई भी हीलिंग के लिए you require actually hypnosis. The client has to close their eyes so that the client can go deeper. अब फिर वो there are different kind of processes. So this was one kind of process. Reiki is another kind of process. Past life is another kind of process, right? अब जैसे past life therapy जो है, उसमें we can work on your ancestral belief, we can work on your belief, we can work on your childhood belief, we can work on your physical body. So many aspects are there. I'm sure in every therapy you can work on all these aspects. In some therapy, the facilitator does more than the client. In some therapy, the client is also involved in the process.
बट बेसिकली कोई भी हीलिंग के लिए आपको हिप्नोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्लाइंट डीप नहीं जा पाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द कॉन्शियसनेस. जैसे अभी जो हमने प्रोसेस देखा जिसमें कि अंकुर वाज टोल्ड ना टू स्कैन हिमसेल्फ. अंशुका भी स्कैन कर रही थी, बट अंकुर को भी बोला गया कि तुम स्कैन करो. जब तक क्लाइंट इन्वॉल्व नहीं है प्रोसेस में, तब तक जो भी हीलिंग होगी वो क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा. Because there are certain processes जहाँ therapist ही करता रहता है. Like let's say tarot. Yeah. Tarot is also a modality not of healing. Okay, but tarot के द्वारा आप बता सकते हैं, but इसमें client involved नहीं है. Correct. इसमें सिर्फ facilitator कर रहा है, वो therapist कर रहा है, but client is not involved in the process. इसलिए टैरो से हीलिंग नहीं हो सकती. आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट हीलिंग नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल. करेक्ट. सो देयर आर प्रोसेस, देयर आर मोडालिटीज जहाँ पे थेरेपिस्ट ज्यादा काम करते हैं, बट जिस मोडालिटी में क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम है, जैसे पास्ट लाइफ थेरेपी में क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम है, बिकॉज क्लाइंट ही बोलता है, क्लाइंट ही एक्सपीरियंस करता है, क्लाइंट को ही दर्द होता है, क्लाइंट ही हीलिंग करता है, तो क्लाइंट ही सब कुछ कर रहा है ना. So then what happens is that the client begins to believe कि ये मैंने किया है तो ये सच होगा. That is why, according to me, past life therapy is the best form of healing. Why? Only because it is the client that is doing everything. We are doing nothing. We are only facilitating the process. That's all we are doing. हमें पता है कैसे facilitate करना है. जैसे अंशुका को पता है कि क्या बोलना है उसको. अंशुका ने फिर भी स्कैन किया. I will not even do that. मैं कुछ भी नहीं करूंगी. I will not get involved in the client's aura at all. Because I don't need that. I want the client to do everything. Because the client's consciousness knows best. हर इंसान की अपनी चेतना सब कुछ जानती है खुद के बारे में. Right? अगर मैं ये कहूं कि मैं सब कुछ जानती हूं तुम्हारे बारे में, no, that's not true. It's not possible. Okay? So in what I believe is, do not get involved in the client's processes. बिकॉज क्लाइंट की कॉन्शियसनेस की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं. यस, आपको पता चल सकता है, पर आपको हर चीज बोलनी नहीं है क्लाइंट को. लेट द क्लाइंट एक्सपीरियंस, लेट द क्लाइंट एक्सप्लोर, लेट द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट हिज कॉन्शियसनेस इज इनफाइनाइट, और वो कहीं भी जा सकता है अपनी कॉन्शियसनेस में हीलिंग के लिए. सो क्लाइंट को हम पावर दे रहे हैं. वी आर गिविंग द क्लाइंट पावर. करेक्ट. तो जब किसी को हम पावर, मतलब क्लाइंट के पास पावर है, हम वी आर नॉट गिविंग द क्लाइंट पावर, वी आर मेकिंग द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट ही हैज पावर. सो व्हाट हैपेंस, जब क्लाइंट को ये पता चलता है कि मैन, आई हैव, माय कॉन्शियसनेस इज सो वास्ट, सो ब्यूटीफुल, सो बाउंडलेस एंड कैन हील एनीथिंग, क्लाइंट विल हील. तो ये सी, हर चीज का एक साइंटिफिक बेस होता है. Even in past life therapy, we can do healing at any level. Not only the DNA level of the person, the DNA level, like Anushka said, of the mother. But everything is being done by the client. As a facilitator, I will never enter the karmic space of the client. I will not pull anything out. I will not get involved in anything. I will ask the client to do it. Because I am not there to get involved in the client's karmic scripts. तो उसका कर्मा है, मेरा नहीं है. So I will not get involved in that space. So every therapy has its own scientific basis. Okay, metaphysical world में ऐसा होता है. So you have to choose what appeals to you. आपको क्या अपील करता है? Because each one of us has our pet therapy. है ना? तो पेट थेरेपी के अंदर यू बिकम अ मास्टर. तो आप कुछ भी सीखो, टैरो सीखो, ये सीखो, वो 1000 चीजें आप सीख सकते हो, बट यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल. अगर आप जैक ऑफ ऑल बन गए तो ट्रस्ट में, जब क्लाइंट आपके पास आएगा आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया इसको इसके साथ में क्या करूं, मैं रेकी करूं, मैं लामा फेर करूं, मैं पास्ट लाइफ थेरेपी करूं, बिकॉज आप खुद ही जैक ऑफ ऑल बन गए. You can learn everything,
but be a master of one. Because जब आप master of one बनेंगे ना, तो जो चीजें उसके साथ लगती है, जैसे अनुष्का ने कहा, जो चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है उसको आप यूज कर सकते हो. Understood? जैसे जब मैं past life therapy करती हूँ, sometimes I feel that this client has trust issues about himself. कई बार client के खुद के भी अपने trust issues होते हैं. So I will tell the client to pick up a card. I have certain cards. So I'll tell the client pick up a card. उस card के ऊपर कुछ, he will not see the card. He will just pick up the card and put it under the pillow. जब session खत्म हो जाता है, session के अंदर जो बाहर निकला है, the issue or whatever that has come out in the session, which the client has released, will be written on that card. जो सेशन के बाद जब वो कार्ड निकालेगा पिलो के नीचे से, he'll be shocked कि oh my god, this is exactly what happened in that past life and it is right there on the card. So trust begins to develop. आपको अलग अलग तरीके से, client has to trust the process, चाहे वो कोई भी process हो, right? जिसके लिए हम अलग अलग इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं, लाइक पेंडुलम डाउजिंग कई लोग यूज करते हैं, इसी तरह से कार्ड्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं. सम पीपल टेक इवन ऑरा पिक्चर्स लेते हैं कई बार. वी टेक अ ऑरा पिक्चर बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन एंड यू विल सी द ऑरा हैज चेंज्ड. ड्राइंग करवाते हैं क्लाइंट से प्रायर टू द सेशन. आई रिमेम्बर वन गर्ल जो मेरे पास आई थी, कई साल पहले की बात है, उसकी ड्राइंग में यूज करती हूँ. तो शी हैड कम एंड शी हैड अ स्किन प्रॉब्लम. तो शी ड्रू हर सेल्फ. मैंने कहा अपना सेल्फ इमेज ड्रॉ करो. तो उसने अपना एक सेल्फ इमेज ड्रॉ किया, वेरी नॉट वेरी नाइस, अगली, डार्क, ऐसे बाल ऐसे एंड ऑल दैट स्टफ. एनीवे वी पुट द ड्राइंग असाइड. उसने पास्ट लाइफ सेशन खत्म किया एंड आफ्टर व्हाटएवर शी रिलीज्ड एंड whatever happened in the session, I said, now can you please draw yourself after the session? She drew a beautiful picture of herself. So in that 3 hours or 2 hours, something changed or shifted in her mind. And now she's perceiving herself differently. जैसे मैं अंशुका को ये कह सकती हूँ कि तुम ये कर सकती हो, सेशन के पहले आप अपने क्लाइंट से ड्राइंग करवाइए और सेशन के बाद ड्राइंग करवाइए. And you will see a shift in the perception of the client. This is all feedback कहते हैं हम इसको, है ना? Yeah. Client को feedback की जरूरत पड़ती है कई बार. It's not enough that you have done the healing. No. Client requires to see कि 1 घंटे बाद मेरे अंदर perceptually क्या shift हुआ है. So sometimes drawings can also depict the client. Oh my God, मैंने ये draw किया था, अब मैं ये draw कर रहा हूँ. अब वो खुद देख सकता है how the shift has taken place in his mind. So there are so many aspects to doing work. And today we have learned about DNA scan. So thank you so much, Anshuka. It was wonderful. And Thank you. Thank you everybody for being here. And Thank you. Thank you, Anushka. I just want to say it was a really powerful session. I totally aligned with it. और मेरी तो बहुत healing हो गई. मैंने अपनी खुद की साथ में बहुत कर ली because it was really powerful. Very nice, Suman. Thank you. Thank you for the Thanks feedback. a lot. डॉक्टर पंकज हेयर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे शेयर करनी है. आपके सेशन में जब भी आता हूँ तो बड़ा इंटेंटली हर चीज सुनता हूँ और समझ में आती है. बट इन दिस पर्टिकुलर सेशन अंकुर के साथ जो प्रॉब्लम है दैट यू गो अप एंड देन यू गो डाउन, अ सिमिलर थिंग इज देयर विद मी. और जब ये सेशन कर रहे थे तो आई वाज नॉट देयर. मैंने सुना ही नहीं, मतलब आई ट्राइड, मैं सुन ही नहीं पाया इन्होंने क्या किया उनके साथ. I missed that piece altogether. मैं सामने बैठा हूँ हेडफोन लगा के. Why would that be? Assistance. Well, it is possible that you are having a similar issue like Ankur. Yeah, because and there is a same sense of, issue. it is possible there is a sense of some denial. Anshuka, you want to say something better? Pankaj ko? Yeah, because same issue है and उनका belief work something, कोई और belief work काम कर रहा था, आपका कोई और belief work है. So universe नहीं चाहता, या your DNA is not allowing you to be in that session, ताकि वो you need different session for this. Oh,
Oh, I नहीं see. तो आपका अधूरा रह जाता, वो खुल तो जाता पीस, उसको लॉक कैसे करते? Oh, I see. इट्स लाइक दैट. Fascinating. Fascinating. पंकज जी ले लीजिए हीलिंग एक. पक्का जी, पक्का अंकुर जी. Please go ahead. चलिए. Thank you everybody for being here. It's always a pleasure every Thursday. We have such amazing people coming और आप सबका participation से ही Thinking Thursday बना हुआ है. और I am always grateful कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं, हमारे WhatsApp ग्रुप इतने एक्टिव है और हर थर्सडे को इतने सारे लोग आते हैं, encourage करते हैं हम लोगों को कि चलता रहे ये. So thank you so much. And डॉक, मैं तो यहाँ तक कहूँगा जिंदा रहने का एक मकसद मिला हुआ है. हाँ, ये कुछ what I say like the community का एक पर्पस है. तो हमारी जो थिंकिंग थर्सडे की जो कम्युनिटी है, ये हर जगह फैली हुई है अभी. और ये एक पर्पसफुल कम्युनिटी है. ये दिस कम्युनिटी इज नॉट काइंड ऑफ विशी वॉशी नहीं है. एवरीबडी इज इनटू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन देयर लाइव्स. और बहुत सारे लोग जो थिंकिंग थर्सडे में है, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं अभी हमारे ही थिंकिंग थर्सडे के मेंटर्स के साथ में. और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म जो है और हीलर्स बनाएगा. एंड पीपल कैन हैव अ बेटर लाइफ. एंड आई ऑलवेज से कि आप जब हील होते तो आपकी फैमिली हील होती है पहले तो. एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम यू, देन योर फैमिली, देन योर कम्युनिटी, देन योर रिलेटिव्स. So that's really how we need to spread our wings. So thank you so much, everyone. Yeah. And it's thank you so much. Thank you everyone. Thank Thank you so you. much.